Chapter 7 Theme for a Dream in English Literature is a chapter of a person named Mariyappan Thangavelu who lived in Salem. A marvelous good morning to all my students of class 4th. Today, through the story of Mariyappan Thangavelu who participated in 2016 Summer Paralympic Games and won the gold medal in high jump, we will learn more about the Summer Paralympic Games. Who started this game and who all can participate in this game. Let us read the chapter. The phone rang in a house in Salem. Mariyappan Thangavelu's mother spoke to the person at the other end. Yes, this is Mariyappan's home. Thank you for your blessings. Please pray for him. Bye. Mariyappan Thangavelu was participating in the 2016 Summer Paralympic Games being held in Rio de Janeiro. It was no ordinary achievement. Students, do you know who all can participate in this Paralympic Games? Yes, the persons who have suffered permanent disability. मतलब कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, जिनके किसी के पैर नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होते, हम उन्हें हैंडीकैप्ड भी कहते हैं, वो लोग इस पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. In this next paragraph, we will come to know how Thangavelu suffered the permanent disability and lost his right leg. Let us read this third paragraph. At the age of 5, Thangavelu suffered permanent disability in his right leg. He was walking to school when he came under a bus, which crushed his leg below the knee. Oh! When it healed, it was not much of a leg. Despite this difficulty, he enjoyed playing volleyball in school. Seeing his talent, his teacher encouraged him to try high jump. He received his first sports award at the age of 14 in 2009. From then on, Thangavelu started training hard for the Paralympic Games. So, what are the Paralympics and how did they begin? We will read regarding the Paralympic Games, its beginning and how it was organized from the next page. Okay? So, let us read. Sir Ludwig Guttmann was a neurologist at the Stoke Mandeville Hospital in Buckinghamshire, England. Do you know who are neurologists? न्यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमारे नर्व्स के डॉक्टर होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो नर्व्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में उनको पता होता है और वो उसके होते हैं डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, नर्व्स के. In 1948, he organized an archery contest for World War II soldiers. Some of these soldiers had lost the use of their limbs because of spinal injuries. Others had their limbs cut off. Sir Guttmann believed that the injured soldiers could heal faster and lead normal lives through sports, and the contest was the result of this belief. सर गुटमन की ये सोच थी कि जो सोल्जर्स ने अपने हाथ और पैर में इंजरीज हुई है, वो इन स्पोर्ट्स अगर खेलेंगे तो उनकी ये जो ताकत है हाथ और पैरों की वापस आ जाएगी और अपने आप में उनमें कॉन्फिडेंस होगा. इसलिए उन्होंने ये गेम्स शुरू की थी उन लोगों के लिए. लेटर more and more differently abled soldiers and civilians wanted to participate in games. So they learned to play games while sitting in a wheelchair or using artificial limbs. ये जो लोग थे, जो differently abled soldiers और civilians, उन्होंने ये गेम खेलना शुरू किया, लर्न करना शुरू किया और वो व्हील चेयर और अपने आर्टिफिशियल लिम्स की मदद से ये गेम्स खेला करते थे. Soon they were ready for wheelchair races and the first sports event for the differently abled took place. Many more events were held after that. These events came to be known as the Stoke Mandeville Games. Other countries too followed their example and encouraged their injured soldiers to take up sports. 4 years later, competitors from the Netherlands joined the games
and it began to be called the International Stoke Mandeville Games. 4 साल बाद नीदरलैंड से भी कॉम्पिटिटर्स आए और इस गेम में हिस्सा लेने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे और इस गेम्स को कहा गया इंटरनेशनल स्टोक मांडेविले गेम्स. That is in 1952. Initially, only sports like running on artificial legs, swimming, or wheelchair races were conducted. Soon, other events for differently abled athletes were organized. Then, in 1960, for the first time, the Olympics and the International Stoke Mandeville Games were held together in Rome, where they came to be called the Paralympics. Eventually, the summer and the winter Paralympics began to be held separately. 1960 में सबसे पहली बार पैरालंपिक गेम्स हुई थी और वो भी ओलंपिक्स गेम्स के साथ, तो उसे कहा गया था ओलंपिक्स एंड द इंटरनेशनल स्टोक मांडेविले गेम्स और एक साथ हुई थी ये रोम में. फिर उसके बाद समर और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग होने लगे, सेपरेटली होने लगे. टुडे द पैरालंपिक्स इज़ अ यूनिक स्पोर्ट्स इवेंट for differently abled athletes to show what the participants are capable of. While the competitions started with just a few games, today differently abled athletes participate in a number of activities from archery to rugby. Participation in the Summer Olympics has increased from 400 athletes to from 23 countries. पहले पैरालंपिक गेम्स में बहुत थोड़े से लोग और बहुत थोड़ी सी गेम्स हुआ करती थी, बट आजकल पैरालंपिक्स गेम इज़ अ यूनिक स्पोर्ट्स, एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स हुआ है जिसमें डिफरेंटली एबल्ड जो एथलीट्स होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो बताते हैं वो किस तरह से कैपेबल हैं. ओके स्टूडेंट्स, पहले इसमें सिर्फ 400 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे, अब इसमें 4350 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और कंट्रीज सिर्फ 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी और अब मोर देन 160 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं. व्हाट अ ह्यूज इंक्रीज इन नंबर, है ना स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग बढ़ गए. नाउ लेट अस रीड द लास्ट पैराग्राफ. It was at the Rio Paralympics that Mariappan Thangavelu won the gold medal in the high jump finals. He received the Padma Shri and the Arjuna Award from the President of India for his achievement. This was a well-deserved reward for the talented high jumper. It seems his journey to stardom has just begun. रियो पैरालंपिक गेम्स में ही मरियप्पन थंगवेलु ने क्या जीता था बच्चों? गोल्ड मेडल एंड इन हाई जंप. ओके, एंड दिस वाज इन 2016 और इससे अपने मरियप्पन थंगवेलु को प्रेसिडेंट ने अवार्ड भी दिया था, पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड. ओके स्टूडेंट्स, फॉर हिज अचीवमेंट्स. Okay students, thank you. I hope you enjoyed the chapter.